बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश कराची बोर्ड के प्रोज सेक्शन के एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज होंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। और इस वीडियो के अंदर हम शामिल करेंगे चैप्टर से जो जनरल एमसीक्यूज हैं ओवरऑल, उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में जो पिछले 11 ईयर्स में आपके एमसीक्यूज आए हैं इस चैप्टर से, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी, इसे एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The text Pakistan Zindabad was written by Sir Henry Wotton, John Walton, J.H. Leigh Hunt, Daniel Jones. The Qaeda-e-Azam first time came to Karachi after separation on 14th August 1947, 7th August 1947, 23rd March, 15th August 1947. आपको पता है कि आपको काम किस तरह से करना है। पॉज करें इस वीडियो को, अपने आंसर्स को नोटबुक में लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लें कि आपने करेक्ट किया है कि इनकरेक्ट किया है। ठीक है, नाउ चेक आउट द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है जॉन वॉल्टन, सेकंड का आंसर है 7th August 1947। On 7th August 1947, the people were stretched from the airport to the city just to welcome the Qaeda-e-Azam, to welcome their guests, to welcome refugees driven from India, to welcome the Muslim leaders. When the Qaeda-e-Azam came to Karachi, he was traveling by a shining black car, red vintage car, shining silver aircraft, green sports car. आपने अपनी वीडियो को अगेन पॉज करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं, फिर इसको रिज्यूम करके आपने अपने आंसर्स को चेक करना है। चेक आउट योर आंसर्स नाउ। थर्ड का आंसर है टू वेलकम द कायदे-ए-आज़म और फोर्थ का आंसर है शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट। इस स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन है उसके अंदर आपको सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, जिसका नाम है द बर्कनहेड ड्रिल। तो अगर आपको बर्कनहेड ड्रिल के भी एमसीक्यूज चाहिए तो आई बटन को क्लिक करें एंड यू विल फाइंड द वीडियो ऑफ दैट चैप्टर 2। फिफ्थ एमसीक्यू है राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द कायदे-ए-आज़म लैंडेड एट मौरीपुर कराची, जिन्ना टर्मिनल कराची, चकलाला बेस रावलपिंडी, नन ऑफ देम। Sixth MCQ है as soon as the Qaeda-e-Azam appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Qaeda-e-Azam Zindabad, Khush Amdid Qaeda-e-Azam, long live Pakistan. Pause the video, write down your answers और उसके बाद जो है आप इसे रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here you go. Mauripur Karachi, that is Madipur in Urdu, और Pakistan Zindabad. When the Qaeda-e-Azam appeared from his plane, he was wearing a pure white three-piece suit, a pure black three-piece suit, a pure white sherwani, a pure gray suit. When the Qaeda-e-Azam smiled once on the Independence Day, he was in the gallery of the government house, room of the government house, balcony of the government house, lounge of the government house. Pause कर लें अपने वीडियो को और अपने आंसर्स को लिख लीजिए और उसके बाद जो है रिज्यूम करके वीडियो को आंसर्स को चेक कर लें। चेक आउट योर आंसर्स। 7 का आंसर है प्योर व्हाइट शेरवानी, 8 का आंसर है बालकनी ऑफ द गवर्नमेंट हाउस। 9th MCQ है when the Qaeda-e-Azam came to Karachi after separation, he showed no sign of his feelings, pride and joy, vigor and excitement, pride and prejudice. In the text Pakistan Zindabad, the Qaeda-e-Azam has been portrayed as very dignified and simply dressed, arrayed, intelligent, fashionable. On the Independence Day of Pakistan, Jinnah was excited, gloomy, shocked, serious, and severe. Pause the video, mention your answers in the notebook, then resume it and check out your answers. 9 का आंसर है no sign of his feelings, 10 का आंसर है arrayed और 11 का आंसर है serious and severe.
जो थर्ड चैप्टर है आपके पास प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर के एमसीक्यूज की वीडियो देखने के लिए जो ऊपर टॉप राइट पर आपके पास आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करें एंड यू विल गेट द वीडियो ऑफ द थर्ड चैप्टर, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके एमसीक्यूज की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। 12th MCQ है, Muhammad Ali Jinnah has been portrayed as sincere and passionate person, calm and serious person, serious but fearful person, excited and vigorous. The name Pakistan was first suggested in 1923, 1933, 1943, 1946. The name Pakistan was first suggested by Chaudhry Iftikhar Ahmad, Chaudhry Rahmat Ali, Chaudhry Sanaullah, none of them. Pause the video, write down the answers, and then resume the video in order to check out your answers. Here are the answers. Calm and serious person, 12th का आंसर है। 13 का आंसर है 1933 और 14 का आंसर है चौधरी रहमत अली। Who was the first Governor General of Pakistan? Sikandar Mirza, Liaquat Ali Khan, Muhammad Ali Jinnah, Chaudhry Rahmat Ali. The Pakistan Resolution was passed in August 1947, March 1945, March 1940, June 1940. The Pakistan Resolution was passed at Minto Park, Lahore, Qaid Park, Karachi, Faisal Park, none of them. Pause the video, write down your answers, then resume the video to check your answers, to tally your answers. Here you go. 15 का आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, 16 का आंसर है मार्च 1940 और 17 का आंसर है मिंटो पार्क, लाहौर। The Pakistan Resolution demanded freedom of Hindustan, government of Muslims in India, separation of India into two states, freedom of Kashmir. Pakistan means the lands of Muslims, the land of Paks pure and clean, the land of Indian Muslims, the land of Indian Sikhs. आंसर लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके और अपने जवाब अब चेक कर लें। 18 का आंसर है सेपरेशन ऑफ इंडिया इनटू टू स्टेट्स और 19 है द लैंड ऑफ पाक्स प्योर एंड क्लीन। Congress leaders spent most of the war time in prison on account of their unjust behavior with the Muslims, condemnation of the British, mass civil disobedience plan, just behavior with the Muslims. Civil disobedience means disobedience with public disobedience for any truth, disobeying laws made by the government, and disobedience of civilians. Pause the video, mention your answers, then resume it to check out your answers. The World War II broke out in 1945, 1939, 1914, 1915. Who was sent as the last viceroy of India? Lord Mountbatten, Lord Nazir, Lord Jacques, Lord Frederick. Mountbatten was sent to India in March 1946, March 1947, August 1946, March 1948. On the separation, the population of Pakistan was 10 million, 50 million, 70 million, and 5 million. स्टॉप कर लें वीडियो को, पॉज कर लें और पॉज करने के बाद अपने आंसर्स को मेंशन कर लें नोटबुक में। मैं आप लोगों को पहले एमसीक्यूज मार्क करने के लिए सबसे कहता हूं कि अगर आप इसे खुद से मार्क करके आंसर्स चेक करेंगे तो जो मेमोरी है वो आपकी स्ट्रांग रहेगी इन एमसीक्यूज को लेके। और अगर आप डायरेक्ट आंसर्स पे आ जाएंगे तो वो इतनी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर नहीं हो पाएगी। लिहाजा बहुत जरूरी है कि मोबिलाइज करें अपने दिमाग को और उसमें पहले आप इसके आंसर्स को सोच लें, लिख लें, उसके बाद अपने आंसर्स को टैली कर लें। Here are the answers. 22 का आंसर है 1939, 23 का आंसर है लॉर्ड माउंटबैटन, 24 का है मार्च 1947 और 25 है ऑन द सेपरेशन, 70 मिलियन। हमारा फोर्थ चैप्टर है प्रोज सेक्शन से ही, उसका नाम है माय बैंक अकाउंट। स्टीफन लिकॉक का चैप्टर है। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और पास पेपर के एमसीक्यूज देखने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर टॉप राइट पर आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करें। यहां आपको उसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की वीडियो मिल जाएगी। 26th एमसीक्यू है कि वाइसरॉय इज अ किंग्स और क्वींस
relative, representative in other country, agent, representative in their own country. After separation, the number of Muslims who left India was 5.5 million, 5 million, 6.5 million, 7.5 million. How many Muslims were missing as a result of killing and imprisoning? 6 million, 500,000, 1.5 million, 7.5 million. पॉज कर लें वीडियो को और फिर अपने आंसर्स को लिखकर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक करें. Here you go. 26 का आंसर है representative in other country, 6.5 million. 28 का आंसर है 500,000. 29th MCQ है, on the separation, Pakistan became the first largest state of all the countries, Muslim countries, underdeveloping countries, Asian countries. Chaudhry Rahmat Ali was a student of Aligarh University, Oxford University, Cambridge University, Ali University. The letter K in Pakistan is considered to be Kathiawar, Kashmir, none of them. Pause the video, write down your answer, and then resume it to check out your answers. Here are the answers. 29 का आंसर है Muslim countries, 30 का आंसर है Cambridge University, 31 का आंसर है कश्मीर. 32 MCQ है, the newspaper which was founded by the Quaid-e-Azam is The Nation, Dawn, Daily News, none of them. Muhammad Ali Jinnah always kept in touch with the Muslim League workers throughout the country. When he could not address them, send them the newspaper Dawn, send them consolation note, wrote them letters, sent them hatred speech. At the time of the Quaid-e-Azam's tragic death, he was over 50, 60, 70, 15. तो जो है पॉज करें वीडियो को, अपने आंसर्स को मेंशन कर लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the answers. 32 का नाम है Dawn, 33 का आंसर है wrote them letters और 34 का आंसर है 70. Muhammad Ali Jinnah died in Karachi on September 11, 1948, 1949, 1947, 1948. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad. Who is being referred? Liaquat Ali Khan, Muhammad Ali Jinnah, Maulana Muhammad Ali, Maulana Shaukat Ali. Here home with them at last was the leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. What does the word home refers? Karachi, Qaid's residence, Moripur, Pakistan. Pause the video, check out your answers, write down your answers, and then resume it so that you can tally your answers with the video. 35 का आंसर है 11, 1948, Muhammad Ali Jinnah, और 37 का आंसर है पाकिस्तान. 38 Muhammad Ali Jinnah would show his feelings occasionally, rarely, usually, always. Jinnah was sad and depressed on the day of separation because he was thinking of thousands who were crossing new border, being ignored, being killed and robbed, invited. Warm-hearted man could be seen behind the stern personality of Jinnah when he looked down on the crowd still cheering in the street outside. He showed disgust, chanted slogan, invited so many people, smiled. Pause the video, write down your answers, then resume it to check out your answers. Here are the answers. 38 का जवाब है rarely, 39 का आंसर है being killed and robbed, और 40 का आंसर है smiled. आपका जो चैप्टर नंबर 10 है प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज, उसके एमसीक्यूज की जो वीडियो है पूरे चैप्टर से और पास पेपर से, उसे देखने के लिए जो आपका राइट स्क्रीन का जो टॉप राइट है, आपकी स्क्रीन का जो टॉप राइट है, वहां पे जो आई बटन है उसे क्लिक करें and you will find the video of chapter number 10, that is the English language. 41 हमारे पास है कि a people who had once been a small defeated group with little to hope for. Who were small defeated group? They were Sikhs, Buddhists, Hindus, Muslims. The name Pakistan is a combination of two different languages. They are Arabic and Hindi, Urdu and Sindhi, Urdu and Punjabi, Urdu and Persian.
The constitutional name of Pakistan is the Islamic Democratic Pakistan, the Democratic State of Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan, yes, sirf Pakistan. Pause the video, mention your answers, resume it, and then check your answers. 41 का आंसर है Muslims, 42 का आंसर है Urdu and Persian, और 43 का आंसर है the Islamic Republic of Pakistan. 44 MCQ है, you are free to go to your temples. Which freedom is being given in the Qaid's quotation? The freedom from Hindus, the freedom of Hindus, the freedom of temples, the freedom of building temples, religious freedom for all. तो इसके आंसर को आपने लिख लेना जैसे आपको पहले बताया गया, गाइड किया गया. 45 जो आपके पास MCQ है वो है giving religious freedom and declaring everyone equal citizens of Pakistan. The Qaid-e-Azam was of course reminding the teaching of the Holy Prophet, peace be upon him, Buddha, Mohandas Karamchand Gandhi और Jesus Christ. अपने आंसर्स को लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर रिज्यूम करें वीडियो को ताकि आपको सही जवाब मिल सके. 44 का आंसर है रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल और 45 का आंसर है द होली प्रॉफिट. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेडेड बाय Jawaharlal Nehru or Gandhi, Allama Iqbal, Muhammad Ali Jinnah. All India Muslim League was founded in 1947, 1940, 1906, 1907. Throughout the war, he was a very sick man. What was the Qaid-e-Azam suffering from? Asthma, tuberculosis, hepatitis, or cancer? Yet an enemy of today is a friend tomorrow. It was stated by Gandhi, Jinnah, Sir Sayyid, Allama Iqbal. Pause the video, write down your answer, then resume the video so that you can check your answers. Here you go. 46 का आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, 47 का आंसर है 1906, 48 का आंसर है ट्यूबरक्लोसिस और 49 का आंसर है जिन्ना. At the time of separation, a large amount of Muslims were left in India. They were 40 million, 50 million, 60 million, 90 million. The first year of Pakistan's history proved to be exciting, progressive, unexciting, terrible. On the separation, not only Muslims migrated, but the Hindus also migrated from Pakistan to India. They were 6.5 million, 5.5 million, 7.5 million, 9.5 million. Pause the video, write down your answers, then resume it so that you can check your answers. Here are the answers. 50 का आंसर है 40 million, 51 का आंसर है terrible और 52 का आंसर है 5.5 million. 53 MCQ है on the separation, all the killing and destruction shocked Jinnah, who always hated Hindus, cruelty and violence, poor people and hunger, the misery of people. 54 है the last year of the Qaid's life was made sad by the plight of refugees, cruelty and violence, poor people and hunger, the fate of Kashmir. Pause कर लें इस वीडियो को, अपने आंसर्स लिख लीजिए और अब उन्हें चेक कर लीजिए. Cruelty and violence और 54 का आंसर है the fate of Kashmir. In the next slides, we are going to discuss the MCQs from the past papers, from the last 11 years, from the paper of science or from the papers of commerce. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो में जितने भी MCQs हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अभी बात की जा रही है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो बैक टू बैक मिलती रहें, तमाम चैप्टर्स की, तमाम पोएम्स की. और वीडियो को कमेंट जरूर किया करें वीडियो पे, क्योंकि इट इनकरेजेस अस टू मेक मोर वीडियोस. इसे लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने क्लास फेलोज और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. तो अब हम शुरू कर रहे हैं पास्ट पेपर्स के MCQs पिछले 11 years के. सबसे पहले हम देखते हैं साइंस के पेपर्स को. The Qaid-e-Azam started a newspaper called The Jung, The Dawn, The Express, The Times. 2016 का ये MCQ है. 2017 और 14 में एक ही MCQ आया, वो था the population of Pakistan at the time of independence was 80 million, 70 million, 50 millions, 40 millions. The person responsible for the fate of Kashmir is a Hindu Maharaja
Lord Mountbatten, the Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Johar. The session of 23rd March 1940 was called the Pakistan Resolution by the British newspaper, Pakistani newspaper, Indian newspaper, French newspaper. उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं the name of Pakistan was coined in the year 1947, 1030, 1933, 1940. ये 2012 में ये आया था आपके पास MCQ. During the Second World War, Indian National Congress started the War for Freedom, War for Separation, Civil Disobedience Movement, struggle for provincial autonomy. You are free. What kind of freedom has been granted by the Quaid-e-Azam in this quotation? ये 2011 का MCQ है. तो इसके पहले आंसर्स आपको बता देता हूं, पॉज कर लें आप, इसके आंसर्स को लिख लीजिए और फिर रिज्यूम करके इसके आंसर्स को देख लें. नाउ द आंसर्स are here. I am telling you verbally. The Quaid-e-Azam started a newspaper called The Dawn. नहीं है, सिर्फ Dawn है ये. The population of Pakistan at the time of independence was 70 million. The person responsible for the fate of Kashmir is a Hindu Maharaja. The session of 23rd March 1940 was called the Pakistan Resolution by the Indian newspapers. The name Pakistan was coined in the year 1933. During the World War II, Indian National Congress started the Civil Disobedience Movement. You are free. What kind of freedom has been granted by the Quaid-e-Azam? It was religious. 2014 और 2010 में यही एक MCQ आया, रिपीट हुआ, यानी कि The Daily Dawn was founded and started by Liaquat Ali Khan, Fatima Jinnah, Muhammad Ali Johar, Quaid-e-Azam. The Pakistan Resolution was passed in the year 1930, 1940, 1960, 1965. Think 100 times before you take the decision was spoken by Liaquat Ali Khan, Fatima Jinnah, Muhammad Ali Johar, Quaid-e-Azam. Pause the video और अपने आंसर्स को लिख लीजिए. जो पहला साल था, यानी कि जब पेपर चेंज हुआ और MCQ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, तो 2009 था. दैट वाज द ईयर 2009 और उसमें ये दो MCQs आए थे. आंसर्स लिख लीजिए और फिर सुन लीजिए इसके के आंसर्स क्या हैं. द डेली डॉन वाज फाउंडेड बाय ऑब्वियसली Quaid-e-Azam. मोहम्मद अली जिन्ना भी हो सकता है इसका जवाब. द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास इन द ईयर 1940. Think 100 times before you take the decision. ये बोला था Quaid-e-Azam ने. अब हम देखेंगे कॉमर्स के MCQs पिछले 11 सालों में कौन कौन से आए. On 7th August 1947, the Quaid-e-Azam was wearing a pure brown sherwani, black sherwani, white sherwani, grey sherwani. These two personalities met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah did not let anybody know his intentions, gestures, thoughts, feelings. The slogan of the crowd at the arrival of Jinnah on the 7th August 1947 was, "Long live Quaid-e-Azam, down with India, Pakistan Zindabad, down with the British." The name Pakistan is the combination of two words taken from the Persian and Urdu, from the language Persian and Urdu, Persian and Arabic, Persian and Siraiki, Persian and English. Pakistan is the land of the Paks, which means pure, brave, strange, great. Jinnah did not let anybody know his intentions, thoughts, gestures and feelings. ये सारे वो MCQs हैं. R&P अगर आप साइड में देख रहे हैं, साइड वाले कॉलम में, तो R&P का मतलब है रेगुलर एंड प्राइवेट. ठीक है ना. 2015 में भी पेपर कंबाइन हुए थे रेगुलर एंड प्राइवेट वालों के. 2014 में शायद सेपरेटली हुए थे, क्योंकि रेगुलर का अलग MCQ आया हुआ है और प्राइवेट वालों का अलग से आया हुआ है. 2013 में भी गालिबन ऐसे ही हुआ होगा कि रेगुलर प्राइवेट अलग हुए होंगे. 2012 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन 15, 16 एंड ऑनवर्ड शायद रेगुलर प्राइवेट एक ही पेपर इनका बना है. तो R&P स्टैंड्स फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट. इसके आंसर सुन लिए ताकि आगे चलें. On 7th August 1947, the Quaid-e-Azam was wearing a pure white sherwani. C is the right answer. These two personalities met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. वो थे A, Jinnah and Gandhi. Jinnah did not let anybody know his D, feelings. The slogan of the crowd at the arrival of Jinnah on the 7th August 1947 was, "Pakistan Zindabad."
The name Pakistan is the combination of two words taken from the language Persian and Urdu. Pakistan is the land of the Paks, which means pure. Jinnah did not let anybody know his feelings. काफी सारे आए हैं और I guess this is the last slide. The Qaeda-e-Azam was welcomed by a huge crowd on 7th August 1947 at Moripur Airport, Mirpur Airport है पहला, sorry, Lahore Airport, Quetta Airport. Qaeda-e-Azam started a newspaper called Daily Jang, Daily Dawn, Daily Express, Daily Times. The first Governor General of Pakistan was Sardar Abdur Rab Nishtar, Liaquat Ali Khan, Maulana Muhammad Ali Jawhar, Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Sorry, scam capital हो गया. The last Viceroy of India was Lord Curzon, Lord Mountbatten, Lord Wavell, Lord Minto. He was responsible for the fate of Kashmir, Maharaja of Kashmir in Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lord Mountbatten. How large was the population of Pakistan when it became independent? 17 million, 40 million, 70 million, 60 million. Pakistan Zindabad was written by John Milton, Henry Wotton, John Walton, George Orwell. The name Pakistan was coined in 1857, 1933, 1940, 1947. The last Viceroy of India was Wavell, Wellington, Mountbatten, Muhammad Ali Jinnah. पॉज कर लें इस वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लीजिए और फिर अपने आंसर्स को टैली कर लें करेक्ट आंसर से. बताने लगा हूं अब. Qaeda-e-Azam was welcomed by a huge excited crowd on 7th August 1947 at Moripur Airport. B is the right answer. The Qaeda-e-Azam started a newspaper called Daily Dawn. B is the right answer. The first Governor General of Pakistan was Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. D is the right answer. The last Viceroy of India was Lord Mountbatten. He was responsible for the fate of Kashmir. Maharaja of Kashmir. A is the right answer. How large was the population of Pakistan when it became independent? C, 70 million. Pakistan Zindabad was written by John Walton. C is the right option. The name Pakistan was coined in 1933. The last Viceroy of India was Mountbatten. कंप्लीट हुई हमारी ये वीडियो और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.